ठीक है बेटे, अभी एड्रेस करते हैं इसको। At the end of the lecture, I would like you to share your copy work with me on WhatsApp. For quadratic formula, okay? What we will do today, after we clarify your mistakes. Okay, so this was 9C silver, 9C silver. Let me change this color and mark some lines. Okay, book is D3, exercise is 1A, question number 3. Any problems or confusions in the last lecture? Yes, sir. In F part. Question number 3. F part, question number 3. Okay, this is x square minus 2 by 9. Sir, what do we have to do? But we'll be doing question 4 today, quadratic formula. But before we do that, I'm just asking you if you have any problems. We'll clear those first. And who's asking this F part? May I know your name? Sir, Ahmed Abdullah Nasir. Sorry, speak a bit louder, please. Ahmed Abdullah Nasir. Ahmed. So Ahmed, x square minus 2 by 9x. X square minus 2 by 9x. When we do completing square, our first step is half of coefficient of x. So half is 1 by 9 square added and subtracted. Any confusion, Ahmed, till now? No, sir. Okay. Ahmed, our second step was to choose these numbers. X is chosen, negative sign is chosen, 1 by 9 is chosen, whole squared minus 1 by 9, 9 times is 81. Ahmed, this is complete. May I know exactly where the problem was? The fraction or anything else? Sir, where did 1 by 9 came? Where is 1 by 9 coming from? Ahmed, coefficient of x is 2 by 9. 2 by 9. Half of it would be, second step is half of it? Yes, sir. Half of it. So Ahmed, 2 by 9 divided by 2 becomes 2 by 9 into 1 by 2. Any disagreement? No, sir. If we cancel these two, are you okay with this? Yes, sir. So this is how you get 1 by 9. बेटे Okay. किसी और ने भी कुछ पूछा है? Is it clear? Yes, sir. ठीक है. सर आप ये क्वेश्चन दिखा सकते हैं थोड़ा ऊपर? जी बेटे, F part. थैंक यू सर, एक मिनट सर. ओके सर. बेटे वीडियो लिंक भी आपके साथ शेयर किया मैं. जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, इन लाइक हाफ आवर और 1 आवर, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द लोड, लिंक जनरेट हो जाता है वीडियो का, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. क्वेश्चन 3 करना है बेटे क्वेश्चन 4 करना है. ये प्रॉब्लम आपकी क्लास फेलो को आई थी, अहमद ने क्वेश्चन पूछा था, वो सॉल्व किया. ठीक है, आज का टास्क होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Sir, can you please solve G part as well? बेटे आई कांट हियर यू.
थोड़ा सा Sir, can you ऊंचा please solve बोले. G part? Sir, G part, can you solve it? जी पार्ट भी सॉल्व नहीं हुआ. अच्छा जी. ओके. G part is x square plus 0.2x. Ahmed, same. Everything is same. X square plus 0.2x. First step. X square plus 0.2x. Ahmed, half of coefficient of x. What will be that? Sir, 0.2 divided by 2. 0.2 divided by 2, that is 0.1 square. Subtract 0.1 square, and then what you do is close the first three and solve the remaining numbers. So you copy x, you copy positive sign, you copy 0.1 whole squared minus 0.1 whole squared. If you simplify that, this is x plus 0.1 whole squared minus 0.01. That's it. Three Sir, steps. understood. First is Sir, if coefficient of x, halved and squared. Second step is added and subtracted. Third step is just the closing and simplification. जी बेटे आप कुछ पूछ रहे थे. नथिंग. सर इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये. बेटे खत्म हो गया. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखे ना. बिल्कुल हो सकता है, करने को हम कर सकते हैं. क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू एक्सप्रेस दिस इन दिस फॉर्म. इसको सिर्फ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो जो डिमांड है क्वेश्चन की वो कंप्लीट हो गई है. ओके सर. सर और मैं यहाँ इसका पर वो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, D3 नहीं है. बेटे आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया है स्ट्रीम पे, काइंडली थोड़ा सा देखें. क्वेश्चन भी डाला हुआ है, वीडियो लिंक भी डाला हुआ है, डिटेल्स सारी मेंशन की हुई हैं. सर ठीक तो है, ये वैसे आप ले लें. अटेम्प्ट कर लें. सॉरी. सर ये क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स होंगे. जी बेटे मैं आपको सिखाता हूँ, रिवाइज करते हैं. क्वेश्चन 4 आपको करवाता हूँ. दिस इज एक्सरसाइज 1. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. इसमें हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब करेंगे, बिकॉज दिस इज बेसिक. दिस इज समथिंग न्यू. जब स्ट्रांग हो जाता है ना, देन यू आर इन अ पोजिशन टू डिसाइड that from new exercise there are 10 questions. How many questions should we do? We should do 3 or 7 depending on the difficulty level, depending on your comfort level and understanding. ठीक है, अभी के लिए we don't have any choice. बेटे हम सारे करेंगे. अभी बहुत छोटे हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करूं? जी सर. ठीक है बेटे, काइंडली पार्टिसिपेट कीजिएगा क्लास में. बहुत कम बच्चे हैं जो अनम्यूट करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं. हाउ वुड आई नो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन 4 एंड द टास्क इज quadratic formula. How do we know that we have to use quadratic formula and not midterm breaking? So this is how you know. The question says giving your answer correct to 2 decimal places. When the question makes it clear that the answer is in decimal places, so you'll know that midterm breaking is not possible. Even if you try to do this, can you think of the 2 numbers? Can you do the midterm breaking? What are the 2 numbers you multiply to get 5? Is 1 and 5 only and nothing else. So when we add 1 and 5, we get 6. When we subtract 1 and 5, we get 4. We do not get 2. So do you agree that midterm breaking is not possible here? Yes. Okay. So we will go for quadratic formula. So the equation is x square plus x and plus the constant. So whatever is with x square is a, whatever is with x is b, whatever is left behind the constant, that is c. So ax square plus bx plus c, and the quadratic formula is minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Any confusions till now? Okay, you No, have sir. to memorize this. Minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. You Sir, have to this is the memorize formula. this. This is the formula. Sir, can I take a screenshot?
Yes, I'll share the video with you as well. बेटे स्क्रीनशॉट से ज़्यादा अच्छा पता है क्या है? ऑन स्पॉट नीट कॉपी, उससे दो फायदे होते हैं. वन इज यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ इट. अपने हाथ से लिखा हुआ ना बहुत जल्दी याद आ जाता है, एक नज़र लगानी और आपको याद आ जाता है. द सेकेंड इज यू विल बी फ्री टू डू समथिंग. आप रिविजन कर सकते हैं, आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं अगर आप अभी ड्यूरिंग क्लास काम कर लेते हैं. ठीक है, कॉपीज रेडी रखें, हम मिलके करते हैं. सर ये अब दोबारा समझा सकते हैं थोड़ा सा? जी बेटे, this is the formula, you have to memorize it. Minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Where are these a, b and c coming from? This is the equation. Above them, ax square plus bx plus c. The values of a, b, c are coming from the quadratic equation. The value of a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the last remaining constant. For example, question 4a. Question 4a is x square plus 2x minus 5. In this case, what is a? 1, Sir, 1, A is 1. What is b? 2, 2, B is 2. What is c? minus minus 5. 5. Minus 5. So what is you'll be going to do is write the formula minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. But I've shared my number at the end of the class. Send me pictures of at least 2 questions, okay? At least 2. I just need to see, are you using this formula in the right way, the brackets, the answers, the standards, because this is not difficult. There are few things the examiner needs So to see. everyone should send you. Everyone. At least 2 questions, okay? Okay, sir. So If like you 2 have your, parts. like 2 parts. If you have your neat copies right now, we can do it together. So minus b is 2 plus minus square the root b square minus 4ac over 2a. Any confusions till now? No, sir. No, sir. Okay, now I need you to use your calculators because in the previous class, few students are facing problem how to plug in these values, how to use it in one go. Let So it me will be show like you this. minus 2. Just a second. I'll try to show you this. Can you see this? The sign, the boxes. Yes, sir. Yes, sir. So you'll have a calculator and it will show you these values. Now I'll plug in all the values in this and show you again. Sir, but I solved it manually, like I simplified it manually. बिल्कुल ठीक है. If it is in P1, you'll have to do it in that way. If it is in P2, you can use your calculators. Manually, you would have done it like this. 5 times is 20 by 2. So this gets minus 2 plus minus square root 24 by 2. Now you need a calculator because 24 is not a perfect square, Sir, it's right? 4.90. So Like thank rounded you. to 2 places. Minus 2 plus square root 24. But if you are doing it individually, every step individually, you'll waste a Sir, lot of time. how do we put plus minus in the calculator? Better you do it one by one. So Just look at this. 4.898. Which sign am I using? Plus. Plus. After using plus, I'll change it with negative sign. Okay, so answer is 1.449. 1.449, but the question says up to 2 decimal places, so I write 1.49. And the other answer is, So it's Right. coming 3.45 minus 3.4. that's right, minus 3.4494, and this becomes negative 3.45. So look at this, a change to the positive sign with the negative number. Okay, and Yes, sir. giving the final statement up till So final we answer up will till 2 decimal places.
जी सर बेटे, जैसे आपने किया है, जी हम बेटे। उसको ऐड तो नहीं करेंगे ना? नहीं, मतलब सेपरेटली, सेपरेटली लिख देंगे, ठीक है सर। सेपरेटली मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सर समझ कैलकुलेटर में हम कैसे लिखते हैं, -2 प्लस स्क्वायर रूट 24/2, और दोबारा लिखते हैं -2 माइनस स्क्वायर रूट 24/2। ठीक है, और एक आंसर आ जाता है 1.45, दूसरा आ जाता है -3.45। इंडिविजुअली करते हैं दोनों को। एक और सर तो क्वेश्चन करते हैं, एज इट क्लियर हो इज लिख जाए। देंगे तो मिल जाएंगे मार्क्स, एज इट इज अगर कर देंगे तो। मैं बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 4A ये आपने नोट किया? मोबाइल यूज कर रहे हैं तो देखना मुश्किल होगा, स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो जी ले सर, लें। ये तो मैंने कर लिया है खुद ही से। सर स्क्रीनशॉट्स ले लो। सर एक मिनट, अभी मैं जरा नोट कर लूँ। सर आपको इस पार्ट की पिक्चर भेजिए और इसके साथ एक और भेजिए, या इसके इनके अलावा कोई दो? बेटे कोई भी दो, मुझे देखना है कि आप कैसे लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर कोई गलती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है? कोई भी दो, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज सेम। अभी ये देखें, क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन 4B, व्हाट इज क्वेश्चन 4B? क्वेश्चन 4B इज 117 एंड -30। और बेटे जो आपने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट वाला, ठीक है, अभी बताता हूँ। 117 एंड -30, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट स्टेप, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज, व्हाट इज a, सर 1 व्हाट इज b, 17 17 17, 17 and what is c, 30 माइनस 30। 30 -30। -30। Okay, -17 plus minus square root 17 square minus 4 times a times c अपॉन 2a। बेटे अब आपका क्वेश्चन था डायरेक्ट कर दें तो आंसर आएगा कि नहीं? यस, आंसर आता है। अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ -17 प्लस √17² -4 इंटू 1 इंटू -30/2। So I'm getting this answer. This is सर ये पेपर 1.61। 2 में आएगा या पेपर 1 में आएगा पेपर क्वेश्चन? 2 में, पेपर 2 ओके में सर। कैलकुलेटर होंगे पास। एंड विद द नेगेटिव साइन आंसर आ रहा है -18.61, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। बेटे अब ये आंसर्स ठीक हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स बिकॉज द एग्जामिनर नोज। किन्होंने क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कैन यू हियर मी? सर कैन यू रिपीट? बेटे अभी पूछा किसने था कि डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? आई डोंट नो सर। आई थिंक अयान ने। अयान आप साथ हैं? सर मैंने नहीं पूछा था। बेटे जिन्होंने पूछा काइंडली टॉक टू मी सो आई कैन मेक श्योर कि आपको समझ आ रही है। ओके, लेट्स से अब्दुल्ला ने पूछा। सो हाउ डू वी डू दैट? बेटे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1। द एग्जामिनर नोज के 1 चूज किया अब्दुल्ला ने और ए में पुट किया, ठीक है। देन द एग्जामिनर नोज दैट अब्दुल्ला चोज बी एज 17 और बी में पुट किया। कलर्स मैप हो रहे हैं, पता चल रहा है? जी सर। देन द एग्जामिनर नोज कि अब्दुल्ला चोज -30 और वो सी में पुट किया और ऐसे पुट किया। सो दिस गिव्स हिम द आइडिया कि Abdullah knows what A is, what B is, what C is, and definitely these numbers are something which they never give you the perfect square. आगे कैलकुलेटर का काम है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा स्टेप्स शो कर दें इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन पंचिंग अ नंबर इन योर कैलकुलेटर। बेटे गलती हो सकती है कि नहीं? -30 लिखना भूल गए, जी जी गलत हो सर। जाएगा, ठीक है।
So that gives you a leverage कि एक मार्क डिडक्ट होता है और बाकी मिल जाते हैं. एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस इसी का नाम है कि हमने प्रैक्टिस करनी है कि ये गलतियां हमसे नहीं हो. सी पार्ट पे मूव करूं बेटे? Yes, sir. Sir, बस जी. I'll share this video link as well, and it is highly suggested. Please do not copy. This is just for your reference. If there is any confusion in this lecture or the last one, we'll always clear your problems first and then move on. This is the very basic. This is exercise 1A. This is the start of quadratics. If your base is strong, we'll pace up in the next exercises. Do not do it on loose pages. Solve it in your neat copy and share it with me after doing it. If you have the next class, you may take your time and share it after school. Okay? Okay, sir. May I move on to next Sir, question? my answer is not coming right. Okay, share it with me. What are you doing? This B part, you're talking about this part? Yes, sir. Show, can you, how will you show that? What are you placing in the calculator? Try that. Are you taking class on laptop or mobile? I'm taking it on laptop. Can you show it this way? This is how we do it. Sir, I'm This is doing it minus on B. the laptop's computer. Sir, wait, I'm showing you. Okay, then you'll get that problems because that calculator will not follow the mass rule. This is scientific calculator. You'll have to use a lot of brackets if you're using that calculator. That is the problem. sir, so my answer is coming as equal 1.61 and the other is minus 18.61. 1.61 and minus 18.61. That's right. See, other members are getting it. But you have to use your scientific calculator, the one which you'll be using in exam. So during exam, you don't have to find where the button is coming from. Where is the square root? Where is the square? Where is the Sir, decimal? okay, from scientific calculator, I'm getting it right. Okay, Shabash. thank That's you. it. That's it. Shabash. Okay. C part. This is 1 minus 12 and 9. 1 minus 12 and 9. So A, B, and C. Anyone? A is, Sir, A is 1, B is 12, and C is 9. B is minus 12 Minus 12. and C is So sorry, 9. 9. Okay, so minus B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. So minus B plus minus. Now this is B is already negative and there is this negative sign from the formula. So be careful when you use your calculator. Either make use of brackets or write 12 directly. Again, many of you will write 12 directly in this because you know that minus 12 square is also 144 and 12 square is also 144. Minus 4AC over 2A. There was a very interesting question in the last class. Someone just asked that is A always equal to 1? Is anyone of you thinking the same? No, sir, if A's value is 2 or 3, we will write 2 or 3. It That is right. depends. It depends. Sir, it depends on the question. It depends on the question. That's right. So now look at this. No one because said who asked the question. So we'll say it Abdullah again. This is how you do it. If you have to show these steps, I'm not doing it directly. If this is P1, I will leave the question here. If this is P2, I have my calculator. This is 12 plus under the root 108 by 2. And that is Sir, जी सर बेटे अगर P1 का तो सर इधर ही रहने देंगे. बिल्कुल because 108 is not a perfect square.
बेटे ये कैलकुलेटर से मैंने आंसर्स लिखे हैं, ये मुझे 2 डेसिमल प्लेस पे लिखवा दें। सर अगर आपका पेपर में मिड टर्म ब्रेकिंग करने का दिल नहीं चाह रहा तो सर आप ये यूज कर 11.2 सकते हैं। एंड बिल्कुल कर सकते हैं। 0.8 शाबाश। 11.2 बेटे एक फर्क है, 11.20 एंड क्योंकि उसने मांगा हुआ 2 0.80 डेसिमल प्लेसेस एंड जी सर। 0.80 0.80। ठीक है, ये सेकंड जीरो लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन Sir, की डिमांड है। जी बेटे ये देखें 2 डेसिमल sir, प्लेसेस। the square of minus 12 is minus 144 or 144? 144 बेटे ये देखें Sir, 12 but in my स्क्वायर इज, calculator, पूछे in my पूछे calcul sir, but in my calculator it is coming minus 144. बेटे आपने ब्रैकेट यूज नहीं की, माइनस पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ, Okay. ब्रैकेट के अंदर करें और अभी आंसर बताएं। Yes, sir, I'm getting 144. ठीक है, ये 3 आंसर्स देखें जरा, ये जो अभी ऊपर लिखे हैं मैंने, ये राइट साइड पे डिफरेंस समझ में आ रहा है। Okay, 12 sir. square is 144, minus 12 square is 144, but when it is minus 12 square, this square is not on negative sign. So the use of machine is important. You have to learn that. Use of calculator is important. But whichever machine you are using today, try to keep that with you in grade 9, 10 and 11. You'll get used to it even if the numbers are erased. Your fingers will know where the button was. Okay? Sir, my rounding off, my second one is coming 0.81. कैसे बेटे शेयर करें जरा, देखें कैलकुलेटर पकड़ें। Said Sir, the 3 in 0.8038 is ये देखें सर मतलब मैंने 108 को पहले ही मैंने 108 की नहीं, स्क्वायर ठीक है की थी। ठीक है ठीक है, आपने उसको इनिशियली राउंड ऑफ कर दिया है जी बेटा। सर। इनिशियल राउंड ऑफ नहीं करते, सिर्फ फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। ओके सर। ठीक है, अभी देखें एक बच्चे ने प्रॉब्लम आई नेगेटिव 144 की, ये भी प्रॉब्लम आई डेसिमल नंबर की। बट दिस इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम शेयरिंग, इसलिए काइंडली क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। वी हैव राफे, नासिर, बाबर, ताहिर, असद, मोहम्मद खान, याहिया, सलीमी, मुनीब, सैयद अमार, and I'm talking to only 2 or 3 people. How would we know कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? This is the start, this is the basic class. Once we know our strengths and weaknesses, बेटे आगे smooth हो जाएगा. I won't be disturbing you. Obviously, this is mathematics. You will be writing something, solve कर रहे हैं, होता जाएगा. ठीक है? दिस वाज सी पार्ट। एक और करते हैं एंड देन आई एक्सपेक्ट कि आप उससे आगे वाला सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करें। सर जी बेटे। सर जैसे -17 स्क्वायर है, उसको स्क्वायर लेके वो पॉजिटिव में हो जाएगा ना। बिल्कुल यस, -17 सर है आप ना। लास्ट पार्ट दोबारा समझा सकते हैं? लास्ट स्टेप जी। अ, कौन सा कह रहे हैं आप? सर 4C, क्वेश्चन नंबर 4C पार्ट, 4C लास्ट दिखा, स्टेप। अच्छा जी ये ले। सर ये लास्ट स्टेप। सर ये जरा समझा दें दोबारा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर -12x प्लस 9। ठीक है, यहां से ये क्लियर है कि ए बी सी की वैल्यूज 1, -12 और 9 है, इसमें कोई डाउट? यस सर। सर ठीक लास्ट है, पार्ट सर। लास्ट पार्ट ओके बेटे। सेकंड लास्ट तो ये है, ये ग्रीन वाला ये पूछ रहे हैं आप। इससे नीचे सिर्फ यस सर राउंडिंग ये की वाला। है, राउंडिंग। सर ये है 11.196 ये वाला पार्ट, जी, ग्रीन कलर। द क्वेश्चन सेज राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटे 2 डेसिमल प्लेस भी क्या बनेगा? यहां तक 2 डेसिमल प्लेस आते हैं। अब ये 6, 5, ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ होता है ना। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, दिस वाज 11.196, जब ये इसको राउंड ऑफ करता है तो बेटे 9 क्या बनेगा राउंड ऑफ होके? 10 बनता है ना। सो व्हेन द नंबर इज इंक्रीजिंग, एक्चुअली उसे 10 नहीं लिखा जाता, वो नेक्स्ट नंबर को राउंड ऑफ कर देता है तो वो 2 बन जाता है।
और ये 0 हमने लगाया क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था। अगर ये होता ना 11 पॉइंट लेट्स से 186, तो बेटे ये राउंड ऑफ ओके हो जाता है 11.19, लेकिन ये 196 है तो ये राउंड ऑफ ओके हो गया 11.9, तो 10 नहीं बना सकते। सो दिस इज 20। ठीक है, ओके सर। सर मेरा आंसर ये नहीं आता 11.196। बेटे क्या आ रहा है? सर मेरा आ रहा है 19.34। बेटे कैलकुलेटर में ना ये आ गया। पूरी वैल्यू लिखे। आया? ये सर पूरी वैल्यू लिखी है। ये देखें मैं इनिशियली राउंड नहीं करूंगा तो फिर मेरा आंसर ठीक आना चाहिए। जी, देखें दिस इज 12 प्लस 108। 12 प्लस 108, लेट मी शो यू। ये देखें ब्लैंक, मैं इसमें लिख रहा हूँ 12 प्लस अंडर रूट 108, सो अंडर रूट 108, 12 प्लस अंडर रूट 108 बेटे डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल का बटन आप प्रेस करें, सी व्हाट यू गेट, 6 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब ये एक बटन है, ये बेटे डेसिमल्स में चेंज कर देगा, डेसिमल में चेंज किया, व्हाट आर यू गेटिंग? सर 11.19। 11.19। So make सर sure you मेरा are using the आंसर fractions 6 correctly. प्लस 3 अंडर रूट 3 आ रहा है। 6 सर प्लस इसमें 3 अंडर रूट 3 बेटे दैट्स राइट। ये देखें 6 प्लस 3 अंडर रूट 3 है ना, कैलकुलेटर में ये बटन होता है, एफ डी लिखा होगा, एफ डी लिखा होगा, वो सर डेसिमल्स में चेंज कर देता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये सर अब 11.196 है ना। 11.196 आ रहा है। हाँ जी, सर इसको राउंड ऑफ करना है, सर ये हो जाएगा 11.2। 11.20 Sir, जी। sir, I have done the part. शाबाश, जल्दी से हमें भी करवाएं। क्वेश्चन 4D, क्वेश्चन इज Sir, question is x square minus 5x minus 5 is equal to 0. I have minus also done 5x D part. minus 5 is equals to 0. That's great. So minus b plus minus square the root b square minus 4ac over AC. 2a. So this is minus into minus 5 plus minus square root minus b minus 4ac over 2a. बेटे आंसर्स बताएं। Sir, my answer is 5.85 and minus 0.85. Yes, sir. 5.85 and minus 0.85. Just let me double check these. Or That's my what answer about as well. others? So we have 3 same answers, and definitely this would be the case. 20 over 2. I'm also getting the same answer, 5.854, and up to 2 decimal places it is 5.85, and with the negative number this is negative 0.8541 and 0.85 up to 2 decimal places. That's right. Any problems? No, sir. We're left with 2 to 3 No, sir. minutes. Thank you so much for coming. बेटे participate करना है. I am here to help you. I am here to make it easy for you. ठीक है? कुछ बोलेंगे, कुछ पूछेंगे, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, -12 का स्क्वायर -144 आ रहा है, किसी का -12 का स्क्वायर 144 आ रहा है, किसी को डेसिमल्स में प्रॉब्लम है। व्हेन यू आस्क समथिंग योर पीयर्स लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। 4D तक बेटे हमने यहाँ पे कर लिया। एटलीस्ट वन क्वेश्चन जो है ना, ये आगे वाला आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, नंबर मैंने चैट में लिखा है, वहाँ से आप नोट कर लें, ठीक है? Okay, sir. कोई सर प्रॉब्लम इसके बाद अभी तो सर तक? फिर से लिख दिया सर अपना नंबर। सर जी मैं इसके फिर बाद से तो लिख देता हूँ। इसके बाद तो क्लासेस हैं, तो इस वजह से हम आपको तो होम जी टाइम बेटे पे बात ऑफ कर टाइम पे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अपना नाम और क्लास मेंशन कर दीजिएगा साथ। Okay, sir. बेटे दोबारा शेयर कर दिए। थैंक यू सो सर मच। देखिए हाफिज़ मैंने सर। आपको भेज दिया है।
मैं अल्लाह भी हाफिज चेक सर। करता अल्लाह हूँ, हाफिज सर। मेरी भी क्लासेस है ना, मैं आफ्टर होम टाइम में इसको चेक करता हूँ। अल्लाह हाफिज सर। Okay, अल्लाह sir. Allah हाफिज, Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz.